पिवटल रोल के बावजूद दोनों साइड से ताल्लुकात रखे हुए अपने मफादात को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के साथ को रखते हुए वो आगे जा रहा था। एंड देन व्हाट हैपेंड, देन द थिंक टैंक, इंडियन थिंक टैंक डिसाइडेड कि हमने अपने आप को ग्लोरीफाई करना है। और आज जो इनक्रेडिबल इंडिया और राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया की जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उनको उस वक्त उन्होंने परसीव किया, उसके ऊपर काम किया। दे सेलेक्टेड अराउंड 1000 बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया, टॉप जो पोजीशन होल्डर्स थे, बच्चे और बच्चियां, 500 बॉयज एंड 500 गर्ल्स, उनको उन्होंने स्टेट की ओनरशिप दी। फॉरेन ऑफिस के थ्रू उनको डिफरेंट रीजन्स और कंट्रीज में इंडक्ट किया गया। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको ये कहा कि मीडिया हाउसेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जीरो से स्टार्ट करें। एंड देन एग्जैक्टली आफ्टर 2 decades न्यू मिलेनियम जब आया तो वो तमाम बच्चे और बच्चियां जो इंडक्ट हुए थे उस वक्त, वो उन मीडिया हाउसेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस में उन पोजीशंस, की पोजीशंस पे जाने के बाद उन्होंने इंडियन मिथ को, इंडियन इंटरेस्ट को, इंडियन अप्रोच को प्रमोट करना शुरू किया। एंड सिमिलरली पैरेलल एक और इनिशिएटिव लिया जब उन्होंने सिलिकॉन वैली, जब उन्होंने कैलिफोर्निया से बेंगलोर शिफ्ट की, उन्होंने आईटी के अंदर डिजिटल एरेना में भी अपनी स्पेस और अपना क्लाउड और अपना प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए अपने इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2 पैरेलल इनिशिएटिव्स लिए। एंड वी वर नॉट टू बी सीन अनफॉर्चुनेटली एनीवेयर। जब ये तमाम चीजें हुई और भला हो उस रब का कि फिर वन फाइन मॉर्निंग दिस नेशन वोक अप एंड दे केम टू नो दैट EU डिसइंफो लैब एक्सपोज इंडिया। कैसे पता चला? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इकोनॉमिस्ट, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, शी रोट एंड शी सेड कि पाकिस्तान को अगर आपने आइसोलेट कर दिया, इंडियन इकोनॉमिस्ट थी, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी डिवाइस करें कि उसके बॉर्डर पे आप फेक करेंसी इन करें, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, उनको इंडियन नेशनलिटी दें। थर्ड, उनके जो भी इकोनॉमी के हवाले से जो उनकी ग्लोबल परसेप्शन है उसको अंडरमाइन करें। फोर्थ, उस मुल्क की जो भी प्राइड है, नेशनल प्राइड, उस प्राइड को चैलेंज करें। फिफ्थ, उसके यूथ के ब्रेन को कंट्रोल करें, हाइब्रिड वॉर एंड 5th जनरेशन वॉर। ये एक 6 पॉइंट इनिशिएटिव था जिसके थ्रू उन्होंने काम किया। एंड देन वी वर कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रोमाइजिंग इन अ सेंस दैट वी played our role in a more significant manner. We were most responsible in every way. Classic example is refugees. Since 1979 you became a president for the entire global community, लेकिन nobody talked about you, nobody valued you. Peacekeeping force में सबसे बड़ी जंग on land में आपका pivotal role. All sorts of drugs, especially 85% of drugs are manufactured in Afghanistan. उसके ड्यूरेंट लाइन पे जो इसके इफेक्ट और फिर ग्लोबल कम्युनिटी जिस तरह इमेज आपका खराब हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, फिर ये जो रिसेंटली हमने विटनेस किया जो टेररिज्म से एसोसिएटेड, और वो तमाम जो भी कौमों की मुहज्जब दुनिया के लिए जो सिग्निफिकेंट और मेजर रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, बट स्टिल नोबडी लिसन टू यू बिकॉज द रीजन वाज कि स्टेट लेवल पे ओनरशिप ना होने की वजह से क्या क्या हुआ। मैं यहां पे, क्योंकि वी आर हेयर ओनली फॉर दिस मदरलैंड और नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुआ क्या कि हमने खुद, जैसे एक घर में अगर कोई मसला बने और उस मसले को कोई मस्जिद के मेंबर पे लाउड स्पीकर पे किसी लोगों सुने, आज मेरी और मेरी वाइफ की, मेरी और मेरी बेटी की लड़ाई हो गई, आज बहू ने इस तरह कर दिया, उस मोहल्ले में क्या वैल्यू होगी उस घर की। सिमिलरली आपने अपने प्रॉब्लम्स को दुनिया के आगे रख दिया, आपने अपने घर के मसाइल को दुनिया के इस तरह रख दिया कि आप समझते कि मैं बहुत शायद अक्ल कुल हूं, हालांकि शरीयत क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है कि घर के मामलात घर में रखो और उसको हल करो। हमने वो नहीं किया और उसका अल्टीमेट रिजल्ट आज ये है कि ये जो एज अ टूल फॉर वॉरफेयर यूज हो रहा है, डिसइंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेररिज्म,
750 labs since 15 years. In 115 countries, you pressurized the key stakeholders, you pressurized UN, you pressurized all those NGOs who were working for human rights, and on top of that, you misguided, disinformed the entire youth, different stakeholders of this entire globe, especially of this region, and you somehow initially succeeded in isolating Pakistan. But what happened? That as a responsible state, so-called responsible state, as the second largest democratic country, second largest market in the world, and then the largest so-called secular country in the world, look what is happening now. International media realize their overall approach and their face is now exposed, where they are not only humiliating, bullying minorities, humanity as a whole. When we talk of human rights, mass rape is a scar on the face of India. When we talk of freedom of expression, UAPA law is another scar on the face of India. When we talk of property right, all those rights which are given and binding upon all signatory states, demographic terrorism is now the order of the day, and they are being deprived of their due rights. When we talk of culture, their cultural identity has been taken away, and now what is happening in illegal Indian occupied and in India as a whole? On one side, they were trying to isolate Pakistan, but at the end of the day, they themselves are exposed now. Classic example, the farmers of Punjab, India, the people of Assam, the people of all the states, irrespective of which religion they belong to, they are going through a very lean patch. And who is responsible again? India. And now the Indian think tanks are at the receiving end. Yes, as a tool you can, for a time being, confuse, achieve your desired objective and confused all the key stakeholders. But at the end of the day, when you are exposed, you yourself become a scar. I believe the role of this motherland of ours and all the stakeholders is now that the Parliament, since Kashmir Committee, has come up with multiple initiatives. We have come up with a digital initiative advisory board, where we have now inducted all those professionals who have got relevant expertise. They are working day and night, and now inshallah, for example, in recent parliamentary committee, Twitter regional head Salama, he was invited on a Zoom, and he had to answer all those questions which were raised by the honorable parliamentarians, and even by the lawfare, by the legal fraternity, especially all those professionals who were a part of that event. Now the message is that this country has the due ingredients and abilities. The only missing link was the role of the professionals. We have now inducted them, made them a part of all those initiatives. For example, it doesn't stop here. It's not only about a digital initiative. We have teams for advisory teams for cultural initiative, for lawfare, for academia, for youth ambassadors, for international parliamentarians, for human rights, and the list is endless, and even for media. In the end, responsible states always analyze things, perceive things before time. They work as a team, they work as a family, and the message to all the media of this motherland of ours is now कि आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप मुल्की मफादात पर सवालात उठाएं. जब आप सवाल उठाएंगे, CNN, BBC, Fox News, जितने भी अल जजीरा, जितने भी चैनल्स हैं, जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी कवरेज करेगा, जो भी उसकी फुटेजेस होंगी, वो उसको इस्तेमाल करते हैं. हिंदुस्तान ने कलभूषण यादव हो, किसी भी ग्लोबल फोरम पे पाकिस्तान में जो कुछ होता है, आसिया
सुप्रीम कोर्ट ब्लास्फेमी का क्लासिक एग्जांपल है। 80 ट्वीट्स पर मिनट बैंगलोर और न्यू दिल्ली से आ रहे थे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी यहां पे खबरें चल रही थी, इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं। वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मुल्क की मफादात को प्रोटेक्ट करना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर के मसाइल हल करना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ पिलर ऑफ अ स्टेट का मेजर रोल ये है कि जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कभी भी नेशनल इंटरेस्ट को किसी हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एंड यस, नाउ it is a test case for us as a government that we need to come up with such policies, reforms through which we become more responsible and make the fourth pillar realize that you have your due role and the state will come to your support. They will invest on you, they will provide you all the relevant opportunities, and inshallah together as a team we will achieve our desired objectives. And yes, India, its policies, Modi, who has got expansionist desire, that Hindutva approach is now exposed, and sooner or later the whole world will realize the world needs to wake up before it's too late. It's a test case for the government of Pakistan, how to tackle it at the highest level. It's also a test case for UN, because the failure of League of Nations is again not only making them realize that any action by UN at any level is properly being observed, gauged, and God forbid if they are unable to realize their importance for the sake of humanity, UN will lose its due role and nobody will start in any capacity serious nahi lenge UN ko. Thank you so much. Long live humanity, long live Pakistan. Thank you.